We come back to more stories in brief that we in fact put out for you now. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda arrived in Jajarkot to meet the people affected by the earthquake that struck the region last night. According to reports, Jajarkot and West Rukum have suffered the most damage, with 92 deaths in Jajarkot alone. More than 140 people have been killed in the earthquake in Nepal. As the death toll continues to mount, search and rescue operations are underway. Launching a scathing attack at the Congress party, UP Chief Minister Yogi Adityanath said that the Congress government only knows to exploit farmers and that they have no right to exist even for a moment. He said, and I quote, "It is the nature of the Congress to speak lies, take power and then do corruption." ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के ले आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं। BJP National President JP Nadda offered prayers at Chirahula Temple in Rewa, Madhya Pradesh. Nadda is in poll-bound state to gather support for the BJP in the upcoming assembly elections slated to be held on the 17th of November. A young girl, Akanksha, had brought a sketch of Prime Minister Modi to present it to him at his event in Kanker in Chhattisgarh on the 2nd of November. Prime Minister has now written to her thanking her for the sketch. In a big boost to ties between India and Italy, External Affairs Minister S. Jaishankar met with Italian President Mattarella. The two leaders discussed ways to advance bilateral strategic partnership in areas like defense, cybersecurity, and counter-terrorism. A thick toxic haze lingers over the city for the 5th consecutive day today, with doctors expressing concerns that air pollution is causing an increase in respiratory and eye problems among children and the elderly. Time now for a short commercial break. On the other side, getting you details as Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in an overnight airstrike. You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि।
आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. इक्विटी, डेट या गोल्ड, किसी एक को क्यों चुने जब तीनों एक स्कीम में मिले? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। फ्यूचुरा डीप फ्राई पैन, परफेक्ट कढ़ाई पनीर एट होम। Wow! Heavy Gay Deep Fry Pan. Futura. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Thank you for staying with Republic. And well, as Republic reports from the frontline, Hamas rocket that landed just 100 meters away from a Republic crew. The pictures that have been accessed where journalists were seen taking shelter following that airstrike launched by the Hamas. Take a look at this report. इस वक्त जो है एक बड़ा हमला हुआ है इजराइल के सेडरोड शहर में। आप देखिए कि एक मिसाइल जो है वो दागी गई है। यहाँ से विजुअल्स आपको विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़ा प्रोजेक्टाइल दागा गया, जो कि बिल्कुल मीडिया सेंटर के बिल्कुल पास, जहां पर लगातार ये कोशिश जो है वो की जा रही है सिविलियंस को निशाना बनाया जाए। और ये एक वैसा इलाका था जहां पर सिविलियंस थे और उसे ही टारगेट करके निशाना बनाया गया। आम लोग यहां पर थे, उसे टारगेट किया गया है हमास की तरफ से। और तकरीबन अगर बात की जाए तो चंद मीटर की दूरी पर हम लोग जहां पर मौजूद थे वहां पर आकर ये प्रोजेक्टाइल गिरा है। आप देखिए ये कार जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि लगातार आपको विजुअल्स जो है वो दिखाएं। सलोनी यहां पर मौजूद हैं। सलोनी जी, बिल्कुल, यहाँ पे तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जोरदार धमाका व गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। यहाँ आप तस्वीर में देख रहे हैं और ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ी, क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट करने पहुंचे थे और अचानक जोरदार अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई जहाँ धमाका हुआ है। विजय सुरेंद्र रावत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और हमने इसे खुद करीब से देखा है, करीब से महसूस किया है। बहुत मुश्किल ये दौर है क्योंकि यहाँ पर तमाम मीडिया पर्सन रिपोर्ट कर रहे हैं और अचानक धमाका होता है और गाड़ी को कैसे नुकसान पहुंचा। आप ये देखिए, शीशा पूरी तरह से टूट गया है। ये मीडिया सेंटर के बिल्कुल करीब है और गुरसिमरन भी लगातार हमारे साथ है। गुरसिमरन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जी देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर लगातार विजय सुरेंद्र शाह जो हैं वो ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर हम लोग मौजूद थे। जैसा एकाएक जो है अलर्ट साउंड होता है, जैसे ही हम लोग किसी तरफ शरण की तरफ भागने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आकर प्रोजेक्टाइल गिरता है। मैं विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि इस तरफ आकर अगर रावत जी दिखा पाए तो आप देखिए कि कितना जिस तरह से इम्पैक्ट जो है वो सीधा इम्पैक्ट था। फ्लैट प्रोजेक्टाइल फायर किया गया था यहाँ से। कोशिश ये थी, क्योंकि ये बिल्कुल पास का इलाका है, यहाँ ज्यादा ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, ये कोशिश हमास के आतंकियों की तरफ से थी। क्योंकि आप देखिए इस तरफ जो है एक बच्चों का स्कूल है, रिहायशी इलाका है, वहां पर लगातार आपको अब अलार्म जो है वो दिखता होगा। और इस तरफ मैं रावत जी से कहूंगा कि अगर आप आए तो हम आपको सरहद जो है वो दिखा पाए, क्योंकि ठीक सामने का इलाका जो है वो गाजा पट्टी का वो इलाका है जहां से लगातार हमास के आतंकी ये कोशिश कर रहे थे कि इजराइल को निशाना बनाया जाए। और ठीक सामने जहां पर एक तरफ इजराइल की तरफ फोर्सेस की तरफ से गाजा पट्टी के अंदर पूरा
ऑपरेशन जारी है। उस बीच एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है लगातार, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान रिहायशी इलाकों को पहुंचाया जा सके। कोशिश हमास के आतंकियों की लगातार यह है कि ज्यादा लोग जो हैं वो इसका निशाना बने, और यही एक अटेम्प्ट किया गया आयरन डोम सिस्टम, क्योंकि एक्टिवेट जरूर था लेकिन वो भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और यही कारण था कि बाल जो है वो जान यहां पर आम लोगों की बची है। हम तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर थे जब यह प्रोजेक्टाइल जो है वो यहां पर आकर गिरता है। अब आप देखिए पुलिस यहां पर आना शुरू हो गई है, क्योंकि ये जब यहां पर इंसिडेंट हुआ है तब पुलिस भी यहां पर मौजूद नहीं थी। पुलिस अभी यहां मौके पर पहुंच रही है, क्योंकि इंसिडेंट हुए तकरीबन जो है वो अभी 1 से 1.5 मिनट का समय हुआ है, और अब जो इजराइल फोर्सेस हैं वो यहां पर पहुंची है, क्योंकि अभी उनको इंफॉर्मेशन मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना लगातार टारगेटिंग जो है वो सिविलियन एरियाज की यहां पर की जा रही है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा अब हमास के आतंकियों की है कि नुकसान पहुंचाया जाए। अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस आप देखिए, और उसके साथ साथ पुलिस यहां पर पूरे इलाके में जिस तरह से उनको इन्फॉर्मेशन मिली है उस पर एक्ट करते हुए पहुंची है। ये जो इलाका है ये इलाका काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए है। सलोनी जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी यहाँ पर जिस तरह का हमला हुआ, गुरसिमरन लगातार बता रहे थे गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब है, और देखिए पुलिस अब पहुंची है। पुलिस को अब जानकारी मिली है कि यहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, और अब पुलिस पूरे इलाके को एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर सकती है। तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर देखिए अंदर जाकर पहले चेकिंग की जा रही है, क्योंकि यहीं पर नुकसान पहुंचा, इसी को एम करके ये हमला किया गया था। और देखिए पुलिस की भारी डिप्लॉयमेंट आप अचानक देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम साथ में आपको दिखाएंगे, बिल्कुल गाजा पट्टी के बिल्कुल करीब। ये देखिए ये जो गाड़ी चकनाचूर हो गई, सुरेंद्र रावत लगातार आपको दिखा रहे हैं। अभी ये हमला हुआ है, हम लोग महज 50 मीटर की दूरी पर थे, गाजा पट्टी पर कवरेज कर रहे थे। इस दौरान गाजा पट्टी का जो बॉर्डर उस पर कवरेज कर रहे थे, इस दौरान ये हुआ है। और देखिए जानकारियां ली जा रही हैं। पुलिस अब तमाम लोगों से बातचीत करके देख रही है, लेकिन ये जो नुकसान हुआ, यहाँ जान भी जा सकती थी। कुछ इसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई थी हमास की तरफ से। इसे कहीं ना कहीं आयरन डोम सिस्टम भी सस्पेक्ट नहीं कर पाया, और ऐसे में ये हमला हुआ है। गुरसिमरन, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं बिल्कुल करीब से हमने इस हमले को महसूस किया। अचानक ये होना, एक सिर्फ अलर्ट आया और ये धमाका हो गया। देखिए अब जब वॉर आगे बढ़ रहा है तो उस बीच चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। आप समझिए कि तकरीबन 50 मीटर का फासला था। अगर 50 मीटर की तरफ हम उस तरफ ना होते तो ये हमारी तरफ हो सकता था, किसी और की तरफ हो सकता था। ये कई जिंदगियां लेने के लिए जो हमला किया गया है, लगातार जहां पर मूवमेंट दिखी जा रही है वहां से ही लगातार हमास के आतंकी हमला कर रहे हैं। और सलोनी, ये समझना बहुत जरूरी है कि जो इलाके कभी सुरक्षित माना जाते थे, जो इलाके जिन्हें कि अब ये माना जाता था कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस क्योंकि गाजा की ओर कूच कर रही है, गाजा पट्टी की ओर, तो वहां से अब अटैक नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए दोबारा से इन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो साफ दर्शाता है कि हमास के आतंकियों की मंशा क्या है। सलोनी बिल्कुल गुरसिमरन, और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये वो जो हमला किया गया, किस तरह से, कितना बड़ा हमला था। एक बार फिर आपको ले चलेंगे जरा, गाजा पट्टी यहाँ से कितनी दूर है गुरसिमरन, जहां हम रिपोर्ट कर रहे थे वहां जरा चलते हैं, जिससे दर्शक समझ पाए कि हमने कितने करीब से इसे महसूस किया। देखिए आप इधर देखिए, ये वो इलाका है जहां हम रिपोर्ट कर रहे थे, और इससे महज 50 मीटर की दूरी पर यह हमला होता है। सलोनी, आईडीएफ जो है वो आप देखिए, आईडीएफ अंदर की तरफ जा रही है। अब लगातार पूरे इलाके की सघन तलाशी भी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट आप देखिए, इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्टाइल का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं विजय सुरेंद्र रावत से कहूंगा कि आपको इम्पैक्ट दिखाएं। देखिए कितना ज्यादा इम्पैक्ट जो है, पावरफुल इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये थी नुकसान पहुंचाया जाए हमास के आतंकियों की तरफ से, और वही उनकी तरफ से किया गया। अब आप देखिए यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जो बॉम्ब डिवीजन के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अब प्रोजेक्टाइल देखा जा रहा है कि जिस प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया ये उसके रिमेन्स हैं उस प्रोजेक्टाइल के, यानी कि वो जो शेल अब बचा है सलोनी, ये वो बिल्कुल जो शेल बचा है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है, और आईडीएफ अब जांच कर रही है। ये देखिए आप तस्वीरें देख पा रहे हैं सबसे पहले, और एकदम करीब से ये हमने महसूस किया। ये देखिए किस तरह से अब इंस्पेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये भी समझना है कि इसकी कितनी पावर थी और कितनी पावरफुल इम्पैक्ट ये रहा। ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आईडीएफ अंदर पहुंच चुकी है, और रिहायशी इलाकों को, सेड्रोड को फिर से सेड्रोड को एक तरह से अब अनसेफ जोन घोषित किया जा सकता है। तस्वीरें हम और गुरसिमरन लगातार दिखा रहे हैं आपको। गुरसिमरन, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इम्पैक्टफुल अटैक इसलिए किया गया क्योंकि हमास को कहीं ना कहीं अब बॉर्डर लाइन करने की कोशिश हो रही है। देखिए वो अभी भी गर्म है, अभी भी उससे धुआं निकल रहा है। देखिए सलोनी, 3 से 4-5 मिनट का ज्यादा से ज्यादा समय हुआ होगा, और अभी एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ शेल्स यहाँ पर गिरे हैं, देखिए ये, और दीवार पर अगर मैं रावत जी से कहूँ दीवार पे दिखा पाए तो दीवार पे आपको शेल्स के निशान आप देखने को मिल जाएंगे। ये वही शेल्स हैं जिनकी
तरफ से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इजराइल डिफेंस फोर्सेस को की गई हमास के आतंकियों की तरफ से जब ये प्रोजेक्टाइल दागा गया। ये चुनौतीपूर्ण काफी ज्यादा है क्योंकि अब वो इलाके जो माना जाता था, क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अब अंदर पहुंच रही हैं तो बाहरी इलाके सरहदी इलाकों पर बहुत बड़ा अटैक नहीं होगा, लेकिन अब लगातार इस तरह के अब आप प्रोजेक्टाइल्स जब फायर किए जाएंगे तो जिंदगियां जो हैं अभी भी दाव पर हैं। जिस तरह से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर एक क्लोज एस्केप हमारे पूरे क्रू के लिए रहा, ये आप समझिए कि वॉर जोन में अभी इजराइल जो है वैसा नहीं माना जा सकता कि वो खतरे से बाहर है। सलोनी, बिल्कुल खतरे से बाहर नहीं माना जा सकता। अभी 50 मीटर की दूरी पर एक बड़ा ब्लास्ट हमने देखा और सुरेंद्र रावत ये तस्वीरें लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं हमारे विजय। देखिए जो प्रोजेक्टाइल फायर किए गए थे उसका इंपैक्ट काफी बड़ा था और अभी यहाँ पुलिस आप देख पा रहे हैं, पुलिस यहाँ मुस्तैद नजर आ रही है, अब पहुंची है पूरे इलाके की जांच करने। और ये अपने आप में बड़ा अटैक था क्योंकि मीडिया यहाँ से रिपोर्ट कर रही है, तो क्या हमास अब टारगेट लगातार देख कर रहा है, ये मॉनिटर कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए इस अगर आप अटैक की एक्यूरेसी कहें तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं अटैक जो है वो सोच समझ के किया जा रहा है। शीशे पे मैं विजय रावत साहब से कहूंगा कि अगर रावत साहब जूम करके दिखा पाए तो कांच जो है उस पर भी आपको निशान दिख जाएंगे। ये निशान उसी इम्पैक्ट के हैं जो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. 65 इंच 4K। देख मन, फिसल मत। यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना, अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो। Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Just another Virtus on a long drive to get coffee. Spreading goosebumps, taking on turns, and what's around the turn. No drive is just another drive when you're in a Virtus. Volkswagen. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, सपनों में रंग भरने की बेफिक्र चिंता करो। पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा? अर्फी? सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। हाँ, पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर TMT का भार होगा। रॉकेट सिंह। अर्फी? लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड TMT बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील TMT बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील TMT बार है बिल्कुल रेडी। You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only.
हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, फाइंड योर मैच। Hi guys, happy Diwali. चलो दीप जला के हर घर सजाए, झिलमिल चेहरों पे खुशी खुशी चहके, रिश्ते होंगे रोशन जगमगाए रे। ओ प्रिय रे आई रे दीवाने, मन ताजीना नाचे, अंग अंग चमके, priceless. हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। I have obsessed over the last 10 years in just figuring out how I can make young women more unstoppable. And as an entrepreneur, you're only as good as your last big product, your last financial year success. And that's why it's not a one-time breakthrough, but you have to keep doing it over and over again. And I think as Sugar, we've been able to do that because we're obsessed. Catch Techno Phantom V Flip 5G presents Women Pioneers of India this weekend only on Republic TV. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. सपनों का सफर शुरू होता है लक्ष्मी के पोल्ट्री फार्म से और जाता है रीमा के ट्रक तक, जो सिंधु की दुकान पर सही समय पर पहुंचता है और व्यापार चलाने में साइना की मदद करता है और अनु को देता है ऊंची उड़ान। इसाफ के साथ सपनों की कड़ियां जुड़ती ही जाती हैं। The power to dream bigger. Isaf Small Finance Bank. Joy of banking. बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। एंड वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। वोल्टास बेको, टेस्टेड बाय रियल मॉम्स। India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Hello and welcome to this edition of Superfast 50, the top 50 stories we're tracking here on Republic TV. Let's begin. I'm Rukma with you. Big political storm erupts over Republic sting. ED claims that it has recorded the statement of a cash courier who alleges that the promoters of the Mahadev betting app had paid 508 crore rupees to Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel till now, and that it is a subject matter of investigation. Prime Minister Narendra Modi targets Congress government in Chhattisgarh over alleged Mahadev betting app scam, says they don't even spare the name of Mahadev. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है? Silent on the 508 crore rupees charge, Chief Minister Bhupesh Baghel is silent on that. Meanwhile, he has lashed out at investigating agencies, instead questioning why have no arrests been made as yet. भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा
निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। And the BJP hits out at even as the allegations over the Congress's links to the Mahadev betting app emerge. Smriti Irani has now hit out at the Congress, alleging that hawala operations were used by promoters of Mahadev betting app to fund Congress's election campaign. Of hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. And as allegations and counter-allegations fly, the Congress has now said that it is a witch hunt launched against Chhattisgarh Chief Minister by the BJP. This is a clear-cut conspiracy headed by the Prime Minister of India to tarnish the image of the Bhupesh Baghel and the Congress government. And in the Nepal earthquake, earliest reports suggest 120 casualties have been confirmed and many more injured as Prime Minister Dahal orders quick relief and rescue operations. And Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal Prachanda arrives in Jajarkot to meet people affected by the earthquake that struck the region last night. Rescue planes carrying people injured as the strong earthquake in northwestern Nepal arrived and began evacuation efforts. Helicopters and ground sorties also rushed to the spot to help people in need. And a thick haze engulfs the city for the 5th consecutive day today, with doctors expressing concern that air pollution is causing an increase in respiratory and eye problems among children and the elderly in the national capital. Who's as yet unborn and is in his or her mother's womb. From that unborn child to newborn, to infants, children, adults, elderly. All age groups are adversely affected by air pollution. And Agriculture Department officials in Moga district of Punjab say that over 300 farmers, 321 to be exact, are involved in stubble burning, and over 200 have been approached with fines for being involved in this. Launching a scathing attack on the Congress, and Yogi Adityanath, Chief Minister of Uttar Pradesh, has said that the Congress government only tends to exploit farmers and that they have no right. ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के ले आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है. And BJP National President JP Nadda is in Rewa in Madhya Pradesh in order to campaign and garner support for the BJP for the polls scheduled to be held in Madhya Pradesh on the 17th of November. Nadda offered prayers at the Chirahula temple in Rewa. कांग्रेस के राज में क्या मिला आपको? आपको मिला कोयला घोटाला, आपको मिला ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, आपको मिला 2G स्कैम का घोटाला, यानी घोटाले पे घोटाला. एक तरफ कांग्रेस पार्टी घोटालों की सरकार,
और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता देश, आगे बढ़ने वाला देश, तेजी से बढ़ने वाला देश, ये हमको समझना है। As many as 1,276 polling stations have been prepared for the Mizoram Assembly elections slated to be held on the 7th of November, counting to take place on the 3rd of December. Congress National President Mallikarjun Kharge had a telephonic conversation with Bihar Chief Minister and JDU leader Nitish Kumar and had a word over India alliance. And according to sources, Kharge has assured Nitish that talks over the India alliance will be carried out after the assembly polls end. FIR lodged against Uttar Pradesh Congress President Ajay Rai on complaint from ABVP for allegedly promoting enmity. According to the complaint submitted to police by an ABVP office bearer, Rai has accused members of the organization of being involved in alleged incident of molestation on Banaras Hindu University campus. BJP functionary Ranjana Nachiyar arrested by police this morning for allegedly assaulting school students for hanging in a government bus. Aam Aadmi Party legislator Chaitar Vasava faces FIR after he allegedly threatens forest department officials and fires one round in the air with a pistol at his residence in Gujarat's Narmada district. His wife and 2 others have been arrested in the case. A young girl, Akanksha, had brought a sketch of Prime Minister Narendra Modi to present it to him at an event in Kanker in Chhattisgarh on the 2nd of November. The Prime Minister has now written to her thanking her for the sketch. In a big boost to ties between India and Italy, External Affairs Minister S. Jaishankar met Italian President Mattarella. The 2 leaders discussed ways to advance bilateral strategic partnership in areas like defense, cybersecurity and counter-terrorism. Fire breaks out at a godown in Gondal of Gujarat's Rajkot. Fire tenders arrived at the spot and doused the flames. However, the cause of the fire has not been ascertained yet, and no reports of any casualty or damages have been reported so far. White House Press Secretary Karine Jean-Pierre reports that another large group of Americans is set to depart Gaza via the Rafah crossing on Friday. Around 1,100 people, including many Palestinians with foreign passports and dozens of injured individuals, have recently left Gaza through the crossing due to an apparent agreement involving the US, Egypt, Israel and Qatar, which mediates with Hamas. Explosions and flares were visible near the Gaza border from Ashkelon as Israeli forces tightened their encirclement of Gaza City. The death toll in the Israel-Hamas conflict has touched 9,227 in Gaza, while over 140 Palestinians have died in the West Bank due to ongoing violence and Israeli raids. Indonesia's government, led by President Joko Widodo, personally oversaw dispatch of initial shipments of humanitarian aid destined for Gaza on Saturday. The 51.5-ton aid package, which encompassed medical supplies, food, blankets, tents, and various logistical support items, was sent off from Jakarta's Halim Perdanakusuma Air Base. President Widodo noted that the aid had been sourced from both government and civilian channels. In Sydney's Hyde Park, dozens gathered for a pro-Palestinian rally on Saturday. Participants chanted "Free Palestine" and other similar slogans while waving Palestinian flags. Similar demonstrations have been taking place in major cities worldwide since the Israel-Hamas conflict in Gaza began. On Friday, airstrikes hit the entrances of 3 hospitals in northern Gaza while medical staff were evacuating the wounded. Israeli troops tightened their encirclement of Gaza City, leading to ongoing battles with Hamas. Terrorists and widespread destruction from airstrikes. Disturbing scenes unfolded outside Shifa, Gaza's largest hospital, with numerous injured, including men, women and children, amid damaged vehicles and ambulances. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, following his meeting with US President Joe Biden in Washington, calls for humanitarian pause in Gaza, pledges to persist until all Canadians are safely evacuated.
Trudeau emphasizes that Canada and the US are steadfast in their commitment to promoting efforts that safeguard human lives, including advocating for a humanitarian ceasefire. 2 rockets hit southern Israel near a gathering of journalists covering the Israel-Hamas conflict, causing minor damage to cars and windows but no injuries. It's unclear whether the rockets were intercepted by Israel's Iron Dome defense system. Tragically, the war has taken a significant toll on journalists, with 36 journalists and media workers losing their lives, as reported by the Committee to Protect Journalists, a New York-based advocacy group. Injured individuals who crossed from Gaza to Egypt arrived at Arish Hospital, and foreign passport holders were observed waiting at the border. Nearly 1,100 people, including hundreds of Palestinians with foreign passports and injured individuals, have left Gaza through the Rafah crossing in recent days, thanks to an agreement involving the US, Egypt, Israel and Qatar, which mediates with Hamas. Israel Defense Forces spokesperson Daniel Hagari described 2 Gazas in the current conflict with Hamas. The south of Gaza is a safer area where Israeli forces concentrate people and allow humanitarian aid, while the north is a focus of complex and tough fighting. He urged Gaza residents in the north to move south to protect themselves and their families. Following an Israeli airstrike, injured and deceased individuals were brought to Nasser Hospital in Gaza's Khan Yunis on Friday. An Associated Press journalist witnessed the arrival of at least 5 bodies and several injured individuals, including children. Medical personnel provided care to the wounded as multiple ambulances arrived at the hospital. IDF shares more footage of combat operations in Gaza, where reserve fighters spotted and eliminated a terrorist squad emerging from a tunnel shaft. Israeli forces have now completely encircled Gaza City, known as the hub of Hamas military infrastructure with extensive underground networks. Leader of the Hezbollah, Hassan Nasrallah, reveals his militia is engaged in unprecedented border clashes with Israel along the Lebanon-Israel border. He also threatened further escalation as the Israel-Hamas conflict nears a month. The speech was broadcast regionally, and in Tehran, Hezbollah and Hamas supporters gathered at the Imam Hussein Square to watch. Israeli Prime Minister Netanyahu has declined U.S. appeals for a humanitarian ceasefire in the Israel-Hamas conflict. Conveys to U.S. Secretary of State Antony Blinken that Israel intends to continue its operations unless Hamas releases the hostages. Blinken, currently on his 3rd visit to Israel since the war began last month, is also scheduled to meet with leaders in Jordan on Saturday. Antony Blinken met with Lebanon's Prime Minister in Jordan as part of his mission to increase Gaza humanitarian aid and reduce civilian casualties. His call for a temporary Israeli military pause was seemingly rejected by Netanyahu. Blinken will also meet with Jordan's king and foreign ministers from Jordan and other Arab nations. Israeli Defense Forces have unveiled footage depicting tanks and soldiers in action in the northern Gaza Strip, along with monochrome footage showcasing Israeli Air Force strikes on the Gaza Strip as Israeli forces surrounded Gaza City. They urged civilians to move south to avoid being caught in the escalating ground war. A Palestinian family separated by the Gaza Strip conflict reunited in Bulgaria after escaping via Egypt's Rafah crossing. Saika El-Sharafi eagerly awaited her son Alia, pregnant daughter-in-law Sali and 4-year-old granddaughter Saikia at Sofia Airport just hours before their flight from Athens was due to arrive. While most members of Congress have expressed strong support for Israel following the recent Hamas attack, Cori Bush, a Missouri Democrat, has diverged from the stance. She has characterized Israel's response as a war crime and an ethnic cleansing campaign, and is one of few House members who do not endorse a resolution in support of Israel. Honduras, like other Latin American countries, has recalled its ambassador to Israel to condemn what it termed as genocide and international law violations in Gaza. The Foreign Affairs Minister, Eduardo Enrique Reina, announced President Xiomara Castro's decision to recall the ambassador, citing the dire humanitarian situation faced by the Palestinian population in the Gaza Strip.
In the midst of the ongoing conflict between Israel and Hamas, the United Nations issues a warning that there are no safe areas left in Gaza. All UN facilities designated for displaced people have been affected by the continuing hostilities. UN Secretary General Antonio Guterres has again urged a humanitarian ceasefire in Gaza, emphasizing that civilians have suffered for almost a month. He stressed on the need to respect international humanitarian law, protect civilians and their infrastructure, and avoid using them as human shields. US President Joe Biden and First Lady visited Maine to mourn with the community of Lewiston, where 18 people were killed and 13 others were injured in a shooting at a bar and a bowling alley last week. US Department of Defense announces additional $425 million worth of security assistance to meet Ukraine's critical security and defense needs. This includes the drawdown of security assistance from DoD inventories, valued at up to $125 million to meet Ukraine's immediate battlefield needs. Inter-Services Public Relations Wing of the Pakistan Armed Forces have revealed that the Miawali training airbase of Pakistan Air Force came under a failed terror attack today, which, due to the swift and effective response by the troops, was foiled and thwarted, ensuring the safety and security of personnel and assets. 3 terrorists were neutralized. 30 military personnel and a pilot have been killed so far. China successfully has sent a communication technology experiment satellite into space from the Wenchang spacecraft launch site on the southern island province of Hainan. Anthony Albanese's visit to China as the Australian Prime Minister signifies improved bilateral relations after years of strained ties over trade and security issues. His centre-left government's election in 2022 presents an opportunity for a reset. On his 3-day visit, Albanese will visit Shanghai and Beijing to meet with President Xi Jinping, making him the first Australian PM in 7 years to do so. Hardik Pandya's ankle injury has not healed, leading to his withdrawal from the tournament. That's the ICC World Cup. Prasidh Krishna will replace him in the Indian squad as confirmed by the ICC. China's Perfect Friday at the WTT Champions Frankfurt was completed by Wang Manu and Ma Long, who won the quarterfinals against Zhu Qianhui and Dmitrij Ovcharov, following the steps of compatriots Wang Chuqin, Sun Yingsha and Wang Yidi. Bottom table Estoril recorded a surprise 1-0 win at Porto in Primeira Liga. However, this is their first win at Estádio do Dragão in 10 years that lifts them up into 14th. Novak Djokovic books a place in the Final Four of the Paris Masters with a hard-fought 7-5, 6-7, 6-4 win over Holger Rune. Djokovic will now play either Alex de Minaur or Andrei Rublev for a place in the final. And 5th-seeded Andrei Rublev came back from a set down on Friday to beat 13th-seed Alex de Minaur for a place in the Paris Masters semi-final. The Russian player will face Novak Djokovic. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. 65-inch 4K. देख मन, फिसल मत. यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए. प्राइस तो देख. तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना. अगली दिवाली. अपने मन की विश को मत टालो. SBI कार्ड के फेस्टिव EMI ऑफर्स के साथ जो मन चाहे ले डालो. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. You're the chase. मैडम सर, छुट्टी चाहिए थी. क्यों? दिवाली की गिफ्ट्स खरीदने. अब सबकी पसंद अलग अलग, तो 10 जगह घूमना पड़ेगा ना.
मिश्रा जी बताइए। स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल में हर गिफ्टिंग आइटम एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी सबसे कम दाम में। तो अब छुट्टी का क्या करोगे? सोच के आई है, चलिए। आ गया फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। इस दिवाली सारी गिफ्ट आइटम सबसे कम दाम पे चाहिए। स्मार्ट बाजार चलिए। New Hawkins Tri-Ply Pressure Cooker. Spices don't stick. Food doesn't burn. New Hawkins Stainless Steel. खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। ये सब क्या है? शनाया और शिवा। शिवा सुना है तुम दोनों ने घर बनाया है। पिंक वाला। घर की नींव में क्या लगता है? हमारा प्यार। प्यार नहीं, कमजोर टीएमटी का वार होगा। रॉकेट सिंह। लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार। जंग से न माने हार, रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. And at least 140 people have lost their lives and scores were injured after the devastating 6.4 magnitude earthquake hit northwestern Nepal. Various districts of the region were affected late on Friday night. The earthquake's impact was felt as far away as New Delhi. Here's a detailed report on the casualties and the rescue operations. A 6.4 magnitude earthquake shook northwestern Nepal districts last night. Over 140 people were killed and over 130 people have been injured as rescuers searched mountain villages. Officials added that the death toll is expected to rise. Residents dug through the rubble in the dark to pull survivors from the wreckage of collapsed homes and buildings. As the day broke, rescue helicopters flew into the region to help security forces with the operations. Army personnel initiated rescue operations in the earthquake-affected areas of Nepal, where injured are being airlifted for treatment. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal arrived in the earthquake-affected regions to assess the situation and meet with those affected. Nepal's last deadly earthquake was a 7.8 magnitude earthquake that was witnessed in 2015, killing at least 9,000 people and damaging about 1 million structures. Bureau Report, Republic TV. Time for a short break. On the other side, Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. with 7 terrain modes and autonomous level 1. The advanced MG cluster, drive unstoppable. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. व्यू मस्त है
और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे विद अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स एंड इंस्टेंट सैंक्शन। जब प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बिना हो हैकर्स के पास अथॉरिटी, फिर किस बात की साइबर सिक्योरिटी? क्विक हील, आज के लाइफ की प्रायोरिटी साइबर सिक्योरिटी। जब मां सरयू के घाटों को दिव्य दीपमालाओं से सजाया जाए, वो दीपोत्सव है। दीपों की असंख्य ज्योतियां जब अवधपुरी सजाए, वो दीपोत्सव है। जब श्री राम की जय जयकार से संपूर्ण अयोध्या धाम गूंजित हो उठे और हर मन मंत्रमुग्ध हो जाए, वो दीपोत्सव है। 2017 से शुरू हुआ दीपोत्सव हर साल एक नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। विकास पथ पर अग्रसर योगी सरकार जहां एक तरफ अयोध्या को आधुनिक बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। दिव्य दीपोत्सव से दैदीप्यमान है श्री राम जन्मभूमि। विकास के प्रकाश से प्रकाशमान है श्री राम जन्मभूमि। आइए आस्था के असंख्य दीपों से सुसज्जित इस दीपोत्सव के साक्षी बने और प्रभु श्री राम का अभिनंदन करें। श्री राम को नमन है, श्री राम का वंदन है। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country only on Republic TV. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Indore, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection? Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of Congress. भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी-बड़ी संदूकें आ रही है स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on 508 crore charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigating agencies. कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और
वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है। Facing heat, Congress is on the back foot now, alleging political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And as the Israel-Hamas war continues to rage on, Republic Media Network and its largest team of reporters have been getting you minute-to-minute updates. Here's a ground report filed by my colleague Gursimran from Armistice Agreement Line near the Gaza border, getting you a sense of Israel's ground preparations as it readies for a mega ground offensive. Here's that report. The war between Israel and the terrorists of Hamas has now entered day 29, and as we continue to report from the armistice line, we see the loud bangs and also the flames that are coming out from the infrastructure of Hamas. I request Vijay Surendra Rawat to show you the visuals that how the airstrikes are taking place and the black smoke that is coming out from the area that is deep inside the territory of Gaza. The place right now from where we are reporting is roughly 200 to 300 meters from the armistice line that divides the Gaza Strip from state of Israel. And now what we see is almost a couple of miles inside the territory of Gaza. These are the intense gunfight and the loud bangs of the artillery fire along with the airstrikes that is taking place. Yesterday we have seen there was multiple attempts by the Hamas terrorists to launch a barrage of rockets into the territory of Israel, that some of them were intercepted. One that came from the Hamas territory landed just 50 meters from us where we were reporting late last night, and as we report, these loud bangs can be heard. These are the artillery fires that are being conducted, and if we speak of the total number of the hostages remains at 241 that are still with the Hamas terrorists. And I'll request Vijay Surendra Rawat if he can show that side, if we can show you the armistice line that divides the state of Israel from the Gaza Strip. This is as per the agreement that has taken place in 1949. And if we speak of the operation that has been carried out so far by the Israel Defense Forces, this continues to be one of the toughest operation in which 338 soldiers of the Israel Defense Forces have lost their life in the operation, and the operation still continues as the top brass, be it the political or the military top brass, they have made it amply clear that no pressure by the international community will affect the ongoing anti-terror operation against Hamas, and this operation Iron Sword will end only with the end of Hamas from the world map. And we continue to report from the armistice line as the war against terror of Israel state intensifies and enters day 29. With Vijay Surendra Rawat, Gursimran Singh from Armistice Line, Israel-Gaza border. Gursimran now joining us live on the broadcast. Gursimran, we just saw your ground report from Armistice Agreement Line, and in fact that earlier report where there was shelling right very close to the media center. Of course, the situation is extremely sensitive because both sides are equally aggressive, and both sides say that it can turn worse. Israel is certainly very clear in its resolve that they will end what the Hamas started. In terms of the escalation, where does it stand now? Because it is going to be close to a month ever since the Israel-Hamas war started.
Yes, so you have rightly mentioned, Suesha, that it is going to be close to a month that the war has started, and now the operations are on to kill the top leadership of Hamas. But after the 30 days, almost the operation is touching. We are on to the 29th day. The Israel Defense Forces are yet to get into the Gaza city, which remains to be the major point of concern for the IDF, as that remains to be the major fort of terrorists of Hamas. As we report from the coastal area of the Ashdod in the southern Israel, the roads here are bearing a deserted look. I'll request Vijay Surendra Shah to show you that how roads are wearing a deserted look. Reason being that this area has been the target of the terrorists of Hamas. They have been launching multiple airstrikes in this area, and that's why the decision was taken that some of the area, the vicinity, will be evacuated by the Israel security agencies, and those who are living here, they have been asked not to venture without any reason outside their homes, so as a precautionary measure. And as we speak, the jets are roaring in the sky, as we heard, very close to the border in the southern side also, here in the area that is the coastal region, and one of the economically very important area. This has been hit several times by the Israel Defense Force, by the Hamas terrorists, so as to target the IDF as well as the civilian. Many of the oil carriers that were coming via sea route to Israel side, they have to shift their locations, shift their routes due to the intense shelling by the terrorists of Hamas. So the Hamas terrorists are trying to hit the Israel side economically as well by targeting the coastal areas, which are one of the key economic measures that helps the state of Israel for their regular functioning. Suesha. And in terms of the civilians, Gursimran, what is it like? Because obviously that is the primary concern and has been that civilians should not be a part of what is happening between both sides. But unfortunately, they've taken the worst hit, and that is the bitter reality of a war. What more can you tell us in terms of how they have completely evacuated and which are the sensitive areas? See, right now we are reporting from the southern coastal area, and here the majority of the areas that are very close to the coast have been vacated. Since this is a city area, here you will find that the roads are bearing a deserted look, but it has not been evacuated. The people are living here inside their houses, so they are carrying out the important task which they are supposed to. But yes, they are not on the roads, not on the markets. The majority of the markets are also closed. Reason being the continuous threat from the Hamas side, because we have seen that a couple of days back on 31st of October, there was a mortar that was launched from the side of Hamas that landed on the highway. Though there was no loss of life, but that was one of the deadliest attacks that we have seen, that inside on the national highway that connects to the Ashdod from the Tel Aviv, that was hit by the terrorists of Hamas. So the Hamas is trying to increase its range, targeting the civilian areas, the cities where they can inflict maximum damage. Now coming to the civilian security, the Israel side is trying to ensure that those areas which are under direct fire, the civilians from there are rescued. But yes, the Hamas is continuously increasing its range of target so that they can inflict maximum casualties to the Iran side. And the worst part of this war has no good for anyone. But yes, the one thing that we have seen is the civilians are the worst hit in this war against terror, be it the terrorists of Hamas who killed 1,400 civilians, including the Israel nationals, and the other side, when the retaliatory action started by the Israel, there were civilian casualties to the people of Gaza as well. Suesha. Absolutely, Gursimran. I want to thank you for getting us all these details, and of course the other concern being humanitarian aid reaching the right hands in the Gaza Strip, because Israel has always been maintaining that civilians should not suffer. At the same time, Hamas should not get any kind of support. But then again, it is a thin line. We'll leave it at that for the moment. Gursimran, thank you for joining us. And on to other stories in brief from the war zone, as Prime Minister Modi spoke with British Prime Minister Rishi Sunak on the phone, where the two discussed the situation in West Asia, particularly the conflict between Israel and Hamas. They expressed concern about terrorism, the deteriorating security situation, and the loss of civilian lives.
Israeli military has said that one of its aircrafts had hit an ambulance that soldiers assessed was being used by a Hamas unit in Gaza. Hamas-run health ministry in the Palestinian area confirmed that 20 people were killed and dozens were injured in an attack targeting a school in northern Gaza. Canadian Prime Minister Justin Trudeau called for a humanitarian pause in Gaza and vowed not to stop until all Canadians are brought out safely. Israel deported thousands of Palestinian workers who were streaming on foot through an Israeli crossing that had been sealed shut since Hamas unleashed its brutal attack to the besieged territory. Explosions and flares could be seen over Gaza from Ashkelon in southern Israel in the early hours of Saturday morning as Israeli troops tightened their encirclement of Gaza City. At least 140 people have died and dozens were injured after a devastating earthquake with a magnitude of 6.4 that struck northwestern districts of Nepal late on Friday night. The earthquake's impact was felt as far as India's capital, New Delhi. Getting you all the details in this report on the rescue operation and casualties caused in this incident. A 6.4 magnitude earthquake shook northwestern Nepal districts last night. Over 140 people were killed and over 130 people have been injured as rescuers searched mountain villages. Officials added that the death toll is expected to rise. Residents dug through the rubble in the dark to pull survivors from the wreckage of collapsed homes and buildings. As the day broke, rescue helicopters flew into the region to help security forces with the operations. Army personnel initiated rescue operations in the earthquake-affected areas of Nepal, where injured are being airlifted for treatment. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal arrived in the earthquake-affected regions to assess the situation and meet with those affected. Nepal's last deadly earthquake was a 7.8 magnitude earthquake that was witnessed in 2015, killing at least 9,000 people and damaging about 1 million structures. Bureau Report, Republic TV. An illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. ये लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं हैं। Hello, Motorola, India's best 5G smartphone brand. Amity has been ranked India's #1 not-for-profit private university for 11th year, with top 10 ranked institutions in management, engineering, biotech, law, masscom, telecom, hospitality, fashion and more. Yet another top ranking for Amity University. Hi guys, happy Diwali.
हर खरीदारी के साथ एक गोल्ड कॉइन मुफ्त। कल्याण ज्वेलर्स। इस दिवाली पूरे मोहल्ले का मुंह मीठा होगा जब इंडियन स्वीट्स पे बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। आ गया स्मार्ट बाजार फेस्टिवल सेल 1 से 15 नवंबर। फेस्टिवल को बेस्टिवल बनाइए, स्मार्ट बाजार चलिए। Just another tycoon, hustling way too early in the morning, passing on this happy tune, helping babies feel at ease. Aw, all kinds of babies. No drive is just another drive when you're in a tycoon. Volkswagen. Helps beat sensitivity fast. Sensodyne Rapid Relief. सपनों का सफर शुरू होता है लक्ष्मी के पोल्ट्री फार्म से और जाता है रीमा के ट्रक तक, जो सिंधु की दुकान पर सही समय पर पहुंचता है और व्यापार चलाने में साइना की मदद करता है और अनु को देता है ऊंची उड़ान। इसाफ के साथ सपनों की कड़ियां जुड़ती ही जाती हैं। The power to dream bigger. इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, joy of banking. बोल्टास बैको ये 30 दिन तक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को फ्रेश रखता है और तुमने मान लिया। वैसे भी 30 दिन की सब्जियां कौन खाता है? तू। वोल्टास बेको डुअल कूलिंग रेफ्रिजरेटर की स्टोर फ्रेश टेक्नोलॉजी से सब्जियां 30 दिन तक फ्रेश रह सकती हैं। Voltas Beko, tested by real moms. With 49 studios, Woodfill has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dehal Prachanda arrived in Jajarkot to meet the people affected by the earthquake that struck the region last night. According to reports, Jajarkot and West Rukum have suffered the most damage, with 92 deaths in Jajarkot alone. More than 140 people have been killed in the earthquake in Nepal as the death toll continues to mount. Search and rescue operations are now underway. Launching a scathing attack at the Congress party, UP Chief Minister Yogi Adityanath said that the Congress government only knows to exploit farmers and that they have no right to exist even for a moment. He said, and I quote, "It is the nature of the Congress to speak lies, then come into power and commit corruption." सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। BJP National President JP Nadda offered prayers at Chirahula Temple in Rewa in Madhya Pradesh. Nadda is in the poll-bound state to gather support for the BJP in the upcoming assembly elections slated to be held on the 17th of November. A young girl, Akanksha, who brought a sketch of Prime Minister Modi to present it to him at the event in Kaker in Chhattisgarh on the 2nd of November, where Prime Minister has now written to her, thanking her for the sketch. In a big boost to ties between India and Italy, EAM Jaishankar met Italian President Mattarella. The two leaders discussed ways to advance bilateral strategic partnership in areas like defense, cybersecurity and counter-terrorism. A thick toxic haze lingers over the city for the 5th consecutive day today, with doctors expressing concerns that air pollution is causing an increase in respiratory and eye problems among children and the elderly.
6 terrorists attacked an Air Force training base in central Pakistani area of Miawali, Punjab, while 3 terrorists were killed before they entered the base and the other 3 who've been cornered. Getting you all the details in this report. Pakistan's terror base in Mianwali was attacked by terrorists in the wee hours today. Pakistan's army said that it has foiled a terror attack at the Mianwali training air base in the Punjab province. 3 terrorists were neutralized while entering the base, while the remaining 3 terrorists have been cornered due to timely and effective response by the troops. However, during the attack, some damage to 3 already grounded aircraft and a fuel browser also occurred. A comprehensive joint clearance and combing operation is in final stages to completely clear the area. The Islamist terror group Tehreek-e-Jihad took responsibility for the attack on the Air Force base. Earlier last week, terrorists launched 2 separate attacks on security forces in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. Bureau Report, Republic TV. Time now for a short commercial break. On the other side, getting you details of the multi-crore betting scam that has hit the Congress as Republic sting operation has become the biggest political talking point. Indore, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on Dubai connection. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. ये वाला तो गूगली है। वो वाला? ये वाला तो सिक्सर है। कौन सा फ्लेवर बिजनेस बढ़ाएगा? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। बिजनेस लोन की चिंता हम संभाल लेंगे। With overdraft like benefits and no collateral up to 75 lakhs. रंग भरा एक किस्सा है, तू वो यार है, तू ही त्योहार है। हर कार में है त्योहार। मारुति सुजुकी अरीना, find your match. This Diwali, New Hawkins, good old friends, fun times again. इक्विटी, डेट या गोल्ड, किसी एक को क्यों चुने जब तीनों एक स्कीम में मिले? म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें। जब एक दिया जलता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। सोचिए, जब आस्था के दीप जगमगाएंगे और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन का उत्सव मनाएंगे, तो कैसा अलौकिक दृश्य होगा, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा और पूरी राम नगरी डूब जाएगी दिव्य अलौकिक दीपोत्सव की जगमगाहट में। आप भी सपरिवार इस विश्व कीर्तिमान का हिस्सा बने और अपनी अयोध्या नगरी को विश्व मानचित्र पर आने का उत्सव मनाइए। भव्य दीपोत्सव, उत्सव त्योहार है, ज्योतिर्मय तेज है, ये रोशनी की धार है, पाप पर प्रहार है, सच की जीत की हुंकार है, दिए से दिया जलाए, राम राज सरकार है, राम 11 नवंबर सरयू घाट पर आइए और प्रभु श्री राम की महिमा गुनगुनाइए।
You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. With 49 studios, Woodville has revolutionized the Indian modular kitchen industry by bringing the best of Europe for Indian homes. Visit the nearest store for a new design and a quote. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand, brings you the latest breaking news update from across the country, only on Republic TV. Confident about the Israeli forces has it, and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, तंगी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई. So there is an alert. There is an alert which has been given. Staying tuned, you're watching live and breaking at 4 p.m. I'm Suesha Sound, getting you all the top stories making news this afternoon. But most importantly, the political reactions coming in on the Mahadev betting app scam and the silence of the Chhattisgarh Chief Minister. That and much more. First, a quick check of the headlines. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes the biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। Indore Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Baghel silent on the Dubai connection. Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expenses of Congress. कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही हैं स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent at 508 crore charge, Bhupesh Baghel now tries to question investigating agencies. उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना
लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है। Facing the heat, Congress is on the back foot now, alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. And the investigation that has become the biggest talking point in the country in the Mahadev betting scam. The first part of this investigation that revealed how the police was in connivance with the accused. The second part of this investigation that revealed the political link of the scam. And now we are getting you the third part where we focus on whether Chief Minister of Chhattisgarh was aware of the scam or not. Take a look at this report. A betting app scam that started in 2021 in Congress-ruled Chhattisgarh. Possibility of political links in the scam cannot be ruled out. When Republic investigative team tried to dig in, the first investigator of the scam said that Chief Minister Bhupesh Baghel knew about the scam. सर आपको लगता है कि मतलब इतना जानकारी ले रहे हैं सर आपको लगता है कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है? देखिए जैसा मुझे समझ में ये आया कि मैं तो सीएम साहब के काफ़ी लंबी बड़ी बात होती थी हमेशा जब भी हाउस में आते थे तो 3-4 चीज़ मुझे क्लियर हुआ कि हो रहा है ये पता था, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा है ये नहीं पता। 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो है कि कुछ फंडिंग हो सकता है पॉलिटिकल फंडिंग बाकी स्टेट्स में करनी पड़ी हो बहुत सारे चुनाव से। The key political link in this scam seems to be Vinod Verma. Chhattisgarh CM's political advisor, IPS officer says he could have benefited in some way. सर लेकिन उनका बेटा खुद इन्वॉल्व था ईडी के पास ऐसे बेटा और उसकी पत्नी दोनों के नाम पे शेल कंपनियां बनाई गई जिससे कॉर्पोरेट अकाउंट से काफ़ी पैसा उनके पास गया। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि देखिए 2 चीज़ें हैं, सतीश चंद्राकर और चंद्रभूषण वर्मा ये दोनों खुल के बोलते थे कि हम चला रहे हैं, ये खुल के नहीं बोलते थे। विनोद जी हाँ विनोद वर्मा ने कभी खुल के नहीं बोला कि मैं संरक्षण दे रहा हूँ, बट पूरा संरक्षण था उनकी तरफ से। वो उनके मैं तो इंक्वायरी की नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इन दोनों का इन्होंने कमिट किया मेरे सामने आके। Baghel's right-hand man Vinod Verma was questioned by agencies in connection with the scam. No evidence as of now. But multiple players of the scam have said that Saurabh Chandrakar has a lot of political clout. मैम ये पूरी सरकार खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं क्या? मुझे लगता है पैसा पूरा सरकार चला रहे हैं ये जो रेड वेड ये सब चीज चल रहा है मैम, ये मेरे को पूरा और टोटल में मेरे को गेम लगता है। Though there is no evidence of the political involvement so far, agencies are already investigating the political link to the scam. But those who know the case inside out believe that the scam of this proportion couldn't have gone unnoticed at political level. Special investigative report by Republic TV. And moving on to the fourth part of this investigation where we are trying to find out if the money was used to fund the election campaign as is being alleged. Take a look. A scam running to the tune of over 400 crore rupees. And in the heat of election campaign, some sensational allegations have been made that proceeds of crime were used for political funding. काम के लिए पुलिस को हाथ रखना जरूरी है और नेता लोग को ये सबका हाथ है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा सामने छत्तीसगढ़ में चुनाव ना सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं, सबके सब पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा और कुछ जैसे कि यहाँ जो पकड़ाए हैं सतीश चंद्राकर और हाँ एएसआई चलो खोल दी ना पड़ी मार दो इसको इतना देता था उसको इतना देता था कहीं कहीं जुगाड़ होगा। The accused in the scam has also claimed that cash was ferried in air ambulances to fund election. देखिए अभी ये हवाला में जो काम हो रहा है ना, अब देखिए अब इनके पास पैसा कैसे आएगा? प्राइवेट जेट से इनके पास पैसा आएगा। प्राइवेट जेट से आएगा या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू इनके पास पैसा आएगा। ऐसा क्यों? मैम देखिए अब ईडी का इतना चल रहा है तो हवाला से भेज नहीं सकते। हवाला से भेज नहीं सकते। मैंने सुना तो कि एयर एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल किए हैं ये लोग। किए अभी पहले किए हैं
पहले किया 2022 में किया था 2022 में इन्होंने किया शेयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया पैसे के थ्रू हुआ। Though the money trail is yet to be established and Hawala transactions are under scanner, the claims made by the key players are certainly explosive. Were proceeds of crime used for election campaign? Did betting scam accused send cash to the political parties? Special investigative report by Republic TV. A day after Republic exposed Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Bagel's alleged link to the multi-crore Mahadev betting scam, Republic's 4-part investigation that has now become the biggest talking point in the country. In Durg on campaign trail, Prime Minister Modi launched a scathing attack on the Congress, asking why is the Congress rattled over the Dubai connection? Listen in to what he said. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। दो दिन पहले ही रायपुर में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। रुपयों का बहुत बड़ा ढेर मिला है। लोग कह रहे हैं कि ये पैसा सट्टेबाजों का है, जुए का खेल खेलने वालों का है, और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को, छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, उनको लूट करके जमा किया हुआ है। लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। मीडिया में आ रहा है कि इस पैसे के तार छत्तीसगढ़ के उन तक जा रहे हैं। मालूम है ना किस तक जा रहे हैं, कहां तक पहुंच रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोगों को मालूम है ना कहां तक पहुंच रहे हैं? जरा जोर से बताइए कहां तक पहुंच रहे हैं? यहां की कांग्रेस पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहां के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं? और मैंने तो सुना है कि नेता यहां के दबी जबान में हमारे यहां मैसेज पहुंचा रहे हैं। हम भी देख लेंगे, हम भी तुम्हारे यहां कहीं पैसे रखवा दे करके पुलिस भेज देंगे। ये धमकियां किसको दे रहे हो? ये किसको डरा रहे हो? ये जनता है, सब कुछ जानती है। As the political storm continues to brew over Republic's 4-part investigation hitting out at the Congress, BJP has now alleged that Hawala operations were used by the promoters of Mahadev betting app to fund Congress's election campaign. Listen in. The electoral history of our country, never before has evidence come forth which clearly indicates
that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai, by looting the poor, has been utilized by the Congress leadership to fight an election. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds towards manipulating the electoral process. Therefore, this line cannot be extended in any way. This line has to be stopped where it is. कि ये लोग 2004 से 2014 तक जब पूरा देश चला रहे थे, तब इन्होंने देश को कितना लूटा होगा, उसकी भी एक वानगी मिलती है मुख्यमंत्री लेवल के इस भ्रष्टाचार से। आप सोचो इस पे क्या कोई बोलेगा, जब मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से गेमिंग ऐप के सहारे और ऐसे पैसे बनाने में लगे हैं, वो जनता के हितैषी क्या हो सकता है? जहाँ का मुख्यमंत्री बिकाऊ हो, जहाँ का सिस्टम बिकाऊ हो, और वो उन्होंने पिन अप किया भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी ने पैसे लेकर, करोड़ों रुपया लेकर उनको अपनी सर्विसेज दी। भूपेश बघेल जी ने अपनी पुलिस उनको दी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया, जिसके चलते उनकी कंपनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ी और हजारों करोड़ रुपया उन्होंने कमाया। महादेव ऐप के माध्यम से 508 करोड़ रुपए का लेन देन, असीम दास का, शुभम सोनी के थ्रू भूपेश बघेल जी को पैसा मिलना, ये सवाल खड़ा करता है कि 508 करोड़ का तो दे दिए हैं, ये तो सामने आया, ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। Were there meetings between or associations between Mahadev app owners who have paid money to Bhupesh Baghel and between anti-national terrorist elements who are enemy number one of India? And if so, then Bhupesh Baghel has not taken money from Mahadev app. He has taken money from India's most dreaded terrorists. As far as the money channeling is concerned, and Dawood Abraham's younger brother is the owner, and based on that, the money is coming into India or to Chhattisgarh. Now, in this case, if this is the channel and these are the people behind it, then certainly you can't rule it out, terrorism money. And I'm quite sure the government, the central government and the agencies, central agencies will always work towards the interest of the country. चल जाएगा। अब चर्चा ये नहीं होगी कि कौन जीतेगा, चर्चा ये होगी कि भाजपा 2/3 बहुमत लेगा कि 2/3 बहुमत के कम रहेगा। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को एग्रीकल्चर में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने एमपी को रोड और रेल नेटवर्क में इतना आगे बढ़ाया। ये भाजपा ही है जिसने एमपी में औद्योगिक विकास किया, इसे आधुनिक शिक्षा का हब बनाया। इसलिए एमपी के लोग भाजपा पर अटूट विश्वास करते हैं और भाजपा पर मध्य प्रदेश का ये भरोसा तब से है जब देश में भाजपा को बहुत कम लोग जानते थे। आज तो भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आज केंद्र में करीब 10 साल से भाजपा की सरकार है। वो भाजपा सरकार जिसने भारत को विश्व में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बना दिया। वो भाजपा सरकार जिसने कोरोना के इतने बड़े महासंकट से उसमें देश को पिछड़ने नहीं दिया। वो भाजपा सरकार जिसके कार्यकाल में देश ने चंद्रमा पर अपना झंडा गाड़ा। आज भारत के गौरव को नई बुलंदी मिली है, नई पहचान मिली है।
और इसमें मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए लोग आज कहते हैं कि एमपी के मन में और मोदी के मन में, इसलिए एमपी कर रहा है एक बार फिर मेरे परिवारजनों, देश हो या फिर हमारा मध्य प्रदेश, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठी घोषणाओं का भोंपू ही बच गया है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए ठोस रोड मैप क्या होगा, ये कांग्रेस को पता तक नहीं है। इतनी दूर की कांग्रेस सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस के नेता फिल्मी हैं, कांग्रेसियों के डायलॉग भी फिल्मी है, कांग्रेस की घोषणाएं भी फिल्मी है, और जब किरदार फिल्मी है तब सीन भी तो फिल्मी ही होगा। यहां कांग्रेस के दो नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है, और अभी तो ये फिल्म का ट्रेलर है। ये अपने अपने चेलों को बताते हैं कि एक बार अगर मौका मिल गया ना, तो उसके बाद वो खुद के तो फाड़ेंगे, आपके भी फाड़ेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा की जीत के बाद यहां कांग्रेस की असली पिक्चर दिखेगी। कांग्रेस की असली सिर फुटबॉल होगी। अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। साथियों, कांग्रेस की आपसी लड़ाई में हमें एक बात कभी भी भूलनी नहीं है। आप याद रखिए, ये जो आपस में गुत्थम गुत्ता है ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं ना, जहां भी उनका मौका मिला है ना, उन्होंने जनता के ही कपड़े फाड़ दिए हैं। और इसलिए इनको अवसर देना ये बहुत बड़ा संकट होता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखिए, 5 साल तक इन्होंने इन राज्यों का क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस मतलब राज्य में हजारों करोड़ के घोटाले, कांग्रेस मतलब राज्य में अपराधियों का बोलबाला, कांग्रेस मतलब राज्य में गरीबों से विश्वासघात, कांग्रेस मतलब राज्य में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार, कांग्रेस मतलब राज्य को बीमार बनाने की गारंटी। कांग्रेस को ऐसे ही काम उनके चरित्र में बन गए, उनके स्वभाव में बन गए, उनके खून का हिस्सा बन गए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ के कांग्रेस के शीर्ष नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये सीएम की कुर्सी के लिए ही नहीं, लेकिन उन्हें पता है उनकी दाल यहां गलने वाली नहीं है, इसलिए वो सीएम कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो अंदर गुत्थम गुत्थी चल रही है ना, कपड़ा फाड़ काम चल रहा है ना, वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है,
मध्य प्रदेश का परचम लहराना कांग्रेस के बस की बात नहीं है। साथियों, भाजपा आपके परिवार के वर्तमान, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। आपका सपना ही मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, मेरी गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। इसलिए गरीब से गरीब परिवार को समर्थ बनाना भाजपा सरकार का मिशन है। इसलिए भाजपा सरकार गरीब की हर चिंता का समाधान कर रही है, गरीब की हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा कर रही है। जैसे गरीब का बहुत बड़ा सपना होता है कि उसके पास अपना पक्का घर हो। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो गरीबों के घर बनाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये भाजपा सरकार है जिसने पिछले 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा घर गरीबों को बना करके दिए हैं। 4 करोड़ घर। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब 50 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना के पक्के घर मिले हैं। यहां रतलाम में भी गरीबों के लिए 90,000 घर बनाए गए हैं। ये लाखों रुपए के घर हैं और इनमें से अधिकतर घरों की रजिस्ट्री बहनों के नाम पर हुई है। और अब हमारा मध्य प्रदेश तो जब भी बहन याद करो तो मामा याद आ ही जाता है। यानी यहां की हजारों महिलाएं लखपति बनी हैं, उनके नाम पर पहली बार कोई संपत्ति हुई है। हमारे शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जिसकी 18 लाख रुपए की आय है उसे घर खरीदने पर ब्याज में छूट देने वाली योजना चलाई जा रही है। और इस देश में आजादी के इतने सालों के बाद भी मध्यम वर्ग के लिए, शहरी मध्यम वर्ग के लिए किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसने इसकी चिंता की। इस योजना का लाभ लेने वाले मध्यम वर्ग के हर परिवार को लाखों रुपयों की मदद हो रही है। मेरे परिवारजनों, जब मैं गरीबों की बात करता हूं तो इसमें भी सबसे बड़ी संख्या मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन और मेरे आदिवासी परिवारों की रही है। ये भाजपा ही है जिसने कोरोना के संकट काल में भी गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना बनाई, एक वक्त के खाने भी किए। भूख क्या होती है ये गरीबी से निकला व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। देश की किसी मां को, किसी पिता को अपने बच्चे को भूखा ना देखना पड़े, आज मोदी इसकी गारंटी बन गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है
और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा जलता रहे, ये मोदी की गारंटी है। और अब ये योजना 5 साल के लिए आगे बढ़ेगी। गरीबों को राशन मुफ्त में मिलता रहेगा। उससे जो पैसे बचेंगे वो जीवन की और आवश्यकताओं के लिए मेरा गरीब लगाएगा। देश के हर गरीब को, हर माता बहन को मोदी जब गारंटी देता है ना, तो गारंटी पूरी करने की गारंटी भी साथ के आता है। साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की हर योजना के मूल में माताएं, बहनें और बेटियां हैं। शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, बिजली और पानी के अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो परिवार में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को होती थी। उज्ज्वला योजना के कारण आदिवासी परिवारों की, दलित पिछड़े परिवारों की करोड़ों बहनों के धुएं से मुक्ति मिली है। और आपको कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन पर एक और खुशखबरी मैंने भेजी थी। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपया सस्ता कर दिया गया। बहनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े, इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने उठाया है। हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविधा होगी। साथियों, डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है, इसका एक और उदाहरण हमारे जनधन खाते हैं। मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए, हर लाभ उन बैंकों के खाते में पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन बैंक खातों के माध्यम से बहनों, बेटियों तक सीधी सहायता पहुंचाई। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान है। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की मांग पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पूरी की। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती, इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हितों की रक्षा, आदिवासी भाई बहनों का कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। ये भाजपा है जिसने देश की आजादी में आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी है। ये भाजपा सरकार है
जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। कुछ दिन पहले ही हमने रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। मुझे जबलपुर में उनके भव्य स्मारक का, गौड़ संस्कृति के स्मारक का शिलान्यास करने का अवसर मिला। मैं और शिवराज जी दोनों वहां जाकर के एक बहुत बड़े काम का आरंभ किया। आज भारत के आधुनिकतम रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर है। आज जननायक टंट्या भील के नाम पर मध्य प्रदेश में अनेक संस्थान हैं, अनेक योजनाएं हैं। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार लोकल उत्पादों को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एक जिला एक उत्पाद के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रतलामी सेब को चुना गया है। यहां नमकीन क्लस्टर भी स्थापित किया गया है। जो नए औद्योगिक क्लस्टर बन रहे हैं, उससे भी छोटे छोटे उद्योगों को बल मिलेगा। नए टेक्सटाइल पार्क से भी अनेक रोजगार बनने वाले हैं। भाजपा के शासन में 21वीं सदी का मध्य प्रदेश अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेस हो रहा है। रतलाम से भी कभी 8 लेन का एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा, पुरानी पीढ़ी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज ये एक सच्चाई बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ये क्षेत्र कोटा और सूरत जैसे शहरों से भी कनेक्ट हो गया है। अब यहां उद्योगों के लिए नया गलियारा बनने जा रहा है, नया कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनने जा रहे हैं। इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में मालवा की, रतलाम की पहचान और सशक्त होगी। मेरे परिवारजनों, देश में ऐसा कोई नहीं है जिसे कांग्रेस ने कभी ठगा नहीं है। हर चुनाव में कांग्रेस कर्ज माफी का झुनझुना लेकर आती रहती है। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था। लेकिन कांग्रेस का इतिहास है कि कांग्रेस की कर्ज माफी का फायदा किसानों को नहीं, कांग्रेसियों को, उनके चेले चपाटों को ही मिलता है। जबकि भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हम किसानों के हर छोटे बड़े खर्चों की चिंता कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के किसानों को 2,60,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खाते में जमा भेजे गए। मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन सरकार के कारण किसानों को डबल फायदा मिल रहा है। आज अनाज हो या फिर दलहन तिलहन, कांग्रेस राज की तुलना में भाजपा सरकार कहीं ज्यादा मात्रा में खरीद कर रही है। हाल ही में गेहूं, चना और दूसरी फसलों के एमएसपी में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ भी मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। किसानों को महंगा यूरिया, महंगी खाद ना खरीदने पड़े, इसके लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। विदेशों में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये की है, आज वही बोरी भारत के किसानों को 300 रुपये से भी कम मिलती है। इस पर भी भाजपा सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मेरे परिवारजनों, समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर परिवार के हित में जब ऐसे काम होते हैं, तभी भाजपा सरकार इतना अधिक भरोसा होता है। यहां रतलाम में जो कुछ मैं देख रहा हूं, वो भाजपा की प्रचंड विजय का उद्घोष है। और साथियों, मैं अभी छत्तीसगढ़ के आ रहा हूं, मेरे शब्द लिख लिए। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार बनना तय है। लेकिन भाजपा की ये विजय सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि 100% बूथों में कमल खिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आपके दर्शन का मुझे लाभ मिला। लेकिन मेरा एक काम आए हैं तो करना पड़ेगा। करोगे? जो बाहर टेंट के बाहर लोग बहुत खड़े, वो सुन रहे हैं मेरी बात? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा काम करेंगे? मेरा एक काम करेंगे आप लोग? ये वाले टेंट वाले भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे।
पक्का करेंगे? मैं भरोसा करूं? वाह, तो मेरा एक काम करिए, ये जो मैं कह रहा हूं ना काम, वो चुनावी काम नहीं है, करोगे ना? चुनाव के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे लिए कह रहा हूं, करोगे पक्का? एक काम करिएगा, यहां से घर घर जाइए और हर घर जाकर के कहिए कि मोदी जी रतलाम आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, इतना कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। हर परिवार में जब मेरा प्रणाम पहुंचेगा, वो माता, वो बुजुर्ग, वो घर के परिवार के मुखिया जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो मेरी काम करने की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती। साथियों, आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये मोमेंटम बना रहे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Four by 4 with 7 terrain modes and autonomous level 1. The advanced MG cluster, drive unstoppable. व्यू मस्त है और चाय भी बुरी नहीं है। नए घर में चाय के मजे कहाँ लोगे? ये खूबसूरत चिंता आप करिए। होम लोन की चिंता हम संभाल लेंगे with attractive interest rates and instant sanction. You are the one. Unmatched, unequaled, unbeatable. LG OLED Evo, the one and only. पहचाना मुझे? मैं गुड्डी। मैं वही हूँ जो रोज मीलों दूर अपनी माँ के साथ कुएं से पानी लाने जाती थी। अब मेरी माँ मुझे रोज कुएं की ओर नहीं बल्कि स्कूल तक ले जाती है। अरे किधर को चली सवारी? कुएं की तरफ तो नहीं? अरे नहीं नहीं सरपंच दीदी, मोदी जी के प्रयास से कुएं पर जाना हुआ बीता हुआ कल। अब तो है हमारे यहाँ नल से शुद्ध जल। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारी परेशानी समझकर इतना बड़ा काम तेजी से पूरा करवा रहे हैं। तभी तो हर घर में नल से शुद्ध जल आने से गांव की सभी बहनों और बेटियों को रोज पानी सर पर ढोकर लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है। हाँ। और साथ ही बीमारियाँ भी बहुत कम हुई है। वाह दीदी।
Take the Futura Dosa Tawa. Futura strong handles don't loosen. Its thickness is just right. The dosa does not stick. Futura Dosa Tawa. India's first certified sustainable heart trolleys, made for nature and tested by nature. Uppercase, never ordinary. A 6.4 magnitude earthquake shook northwestern Nepal districts last night. Over 140 people were killed and over 130 people have been injured as rescuers searched mountain villages. Officials added that the death toll is expected to rise. Residents dug through the rubble in the dark to pull survivors from the wreckage of collapsed homes and buildings. As the day broke, rescue helicopters flew into the region to help security forces with the operations. Army personnel initiated rescue operations in the earthquake-affected areas of Nepal, where injured are being airlifted for treatment. Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal arrived in the earthquake-affected regions to assess the situation and meet with those affected. Nepal's last deadly earthquake was a 7.8 magnitude earthquake that was witnessed in 2015, killing at least 9,000 people and damaging about 1 million structures. Bureau Report, Republic TV. मन चाहे 65 इंच 4K। देख मन फिसल मत, यही चाहिए, यही लूंगा, यही चाहिए। बस तो देख, तू इस बार भी नहीं लेगा ना? लूंगा ना अगली दिवाली। अपने मन की विश को मत टालो। SBI कार्ड के फेस्टिव EMI Us marched into a kibbutz that is 2.1 kilometers from the border. This is kibbutz Nir Ozi, and as we walk inside the kibbutz Nir Ozi, there are the pictures of the drastic horror that the terrorists of Hamas have unleashed here at the ground zero. They have also put the gasoline so as to ensure that all people are burned. More than 100 people were killed by the terrorists of Hamas, and 80 have been abducted from this kibbutz. As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. These are the artillery fires that are being done on the targets of Hamas and Hamas terror cadres that are roughly a mile from here. Israel Defense Forces are technically moving inside. The three teams that entered are now split into close to a dozen locations. That clearly shows that how this operation is planned and is being executed. The missile attacks can also be carried out at the targets of Hamas.
के बहुत करीब है, करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ गाजा है। ये एशकॉल सेटलमेंट का एरिया है, यहाँ पर टैंक्स तैनात किए गए हैं। रात भर यहाँ पे शेलिंग होती रही। ये वो इलाका है जो सबसे करीब था जब आतंकवादी 7 अक्टूबर को घुसे यहाँ पर। ये बेतरतीब तस्वीरें बताती है कि आखिर किस तरह से आतंकवादियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। आर्मी की बीएमपी जाती भी दिखाई दे रही है। लगातार सैनिकों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना है। About the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, आतंकी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. The electoral history of our country, never before has evidence come forth which clearly indicates that Hawala operators, instructions and monies emanating from Dubai by looting the poor has been utilized by the Congress leadership to fight an election. If your allegation is correct that the funds being moved around through an illegal operation were actually being used to fund the electioneering process, then that would raise questions about the sanctity of the process and the use of illegal funds towards manipulating the electoral process. Therefore, this line cannot be extended in any way. This line has to be stopped where it is. कि ये लोग 2004 से 2014 तक जब पूरा देश चला रहे थे तब इन्होंने देश को कितना लूटा होगा उसकी भी एक वानगी मिलती है मुख्यमंत्री लेवल के इस भ्रष्टाचार से। आप सोचो इस पे क्या कोई बोलेगा जब मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह से गेमिंग ऐप के सहारे
और ऐसे ऐसे पैसे बनाने में लगे हैं, वो जनता के हितैषी क्या हो सकते? जहाँ का मुख्यमंत्री बिकाऊ हो, जहाँ का सिस्टम बिकाऊ हो, और वो उन्होंने पिन अप किया भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी ने पैसे लेकर, करोड़ों रुपया लेकर उनको अपनी सर्विसेज दी। भूपेश बघेल जी ने अपनी पुलिस उनको दी और अपना एडमिनिस्ट्रेशन उनको दिया, जिसके चलते उनकी कंपनी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और हज़ारों करोड़ रुपया उन्होंने कमाया। फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में। इस वक्त हम किशोर फिल्म में है, तस्वीरें आपको डरा देंगी, झकझोर देंगी। सुबह 6:30 बजे का वक्त था और यहाँ पर आतंकवादी अचानक पहुँचते हैं। करीब उनकी तादाद 180 रहती है। घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इतनी ब्रुटैलिटी शायद ही कभी इतिहास में किसी ने देखी होगी। बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये पूरा किचन का एरिया है जिसे जलाकर राख कर दिया गया। हमास के आतंकवादियों ने यहाँ पर ब्रुटैलिटी दिखाई है और इतनी बड़े पैमाने पर नरसंहार किया कि हम उसकी विवेचना नहीं कर सकते। As we report from the ground zero, the loud bangs can be heard in the background. Pakistan's terror base in Mianwali was attacked by terrorists in the wee hours today. Pakistan's army said that it has foiled a terror attack at the Mianwali training air base in the Punjab province. 3 terrorists were neutralized while entering the base, while the remaining 3 terrorists have been cornered due to timely and effective response by the troops. However, during the attack, some damage to 3 already grounded aircraft and a fuel browser also occurred. A comprehensive joint clearance and combing operation is in final stages to completely clear the area. The Islamist terror group Tehreek-e-Jihad took responsibility for the attack on the Air Force base. Earlier last week, terrorists launched 2 separate attacks on security forces in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. Bureau Report, Republic TV. गाजा के बहुत करीब है, करीब 500 मीटर की दूरी पर यहाँ गाजा है। ये एशकॉल सेटलमेंट का एरिया है। यहाँ पर टैंक्स तैनात किए गए हैं। रात भर यहाँ पे शेलिंग होती रही। ये वो इलाका है जो सबसे करीब था जब आतंकवादी 7 अक्टूबर को घुसे यहाँ पर। ये बेतरतीब तस्वीरें बताती हैं कि आखिर किस तरह से आतंकवादियों ने मासूम लोगों को निशाना बनाया। आर्मी की बीएमपी जाती भी दिखाई दे रही है। लगातार सैनिकों के आने जाने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमें इशारा कर रहे हैं कि हमें यहाँ नहीं रुकना है।
फिर से शेलिंग शुरू हो चुकी है। धमाकों की आवाज बैकग्राउंड में आ रही, शायद आप सुन भी पा रहे हो। आज का दिन बहुत अहम है आईडीएफ के लिए, क्योंकि गाजा पट्टी का वो इलाका जहां पर हमास के आतंकवादी रह रहे थे, उनमें बहुत सारे जो ठिकाने थे लॉन्चिंग पैड से, उनको तबाह किया गया है। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है आईडीएफ फोर्सेज और गाजा के अंदर दाखिल होकर आज भी बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा। तेल अवीव में अमेरिकन अधिकारी पहुंचे और कुछ जो अमेरिकन मरीन्स हैं वो एक संयुक्त ऑपरेशन आज रात को करने जा रहे हैं गाजा के इलाके में। About the Israeli forces has it and they are on their way. रॉकेट जो है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं और वो देखिए आप हमारे सिर के ऊपर से पास में जो है वो यहाँ पे मिसाइल्स गिरी है। इजराइल अब ये इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सभी लोगों को बाहर लेकर आया जाएगा, तंगी को खत्म करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी इजराइल ने बनाई है उसकी तैयारी भी की जाएगी। ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ 12ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ದಿಟ್ಟ ವರದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, गोलियों की बौछार हमास के आतंकियों द्वारा कर दी गई। So there is an alert. There is an alert which has been given. Hello and welcome. You're watching Live at Breaking with me, Shavin Sen. A top focus, a sting that has now become the biggest political talk point. Starting from Union Minister Smriti Irani to Anurag Thakur, everyone hailing Republic's sting, which raises some very uncomfortable questions for the Congress government in the state of Chhattisgarh. Bhupesh Baghel says that this is an attempt that has been made by the Bharatiya Janata Party to tarnish his image. In fact, the Prime Minister too took a dig earlier in the day. All this and much more in this edition, but up first, these are the headlines we are tracking for you at this hour. Multi-crore betting scam hits Congress as Republic sting operation becomes the biggest political talking point. यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। In Durg, Prime Minister raises the Mahadev scam story, asks why is Bhupesh Baghel silent on the Dubai connection? Use of Hawala operations and illicit money emanating from Dubai by illegal betting operators. Union Minister Smriti Irani hits out in an unrelenting attack, says illegal betting operators funded election expense of the Congress. कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं रही है, केंद्रीय जांच एजेंसी ही लड़ाई लड़ रही है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग को ये ध्यान देना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी संदूकें आ रही हैं स्पेशल प्लेन से, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। Silent on the 508 crore rupees charge, Bhupesh Baghel now tries to question the investigative agencies. उनका काम ही है कि लोगों को डराना, लोगों को फंसाना और वर्करों को डिमोरलाइज करना। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे डरने वाले वोटर्स नहीं है।
Facing heat, Congress on the back foot now alleges political witch hunt against Bhupesh Baghel. Israel's relentless fight against terror continues. Hamas bases struck in overnight airstrikes. More than 140 killed, several injured in midnight Nepal earthquake. Rescue and relief operations underway. Well, starting this edition with some breaking news now coming in from Pakistan. 24 hours after Pakistan issued the deadline to refugees, Afghan refugees, it turns out that there are repercussions that are taking place inside Pakistan. In fact, 14 Pakistani army soldiers have been killed after two vehicles belonging to security forces were basically ambushed by jihadis. In fact, it turns out that in Balochistan's Gwadar district is where this incident took place. Now, the ISPR says that the vehicles were moving from Pasni to Ormara when they were ambushed. It said 14 soldiers were killed. Let me just quickly bring in my colleague Kaswar, who's joining us on this broadcast. Kaswar, just take us through the details that you're getting in with regards to Pakistani soldiers who have been killed, who's taken the responsibility for it, and also perhaps the little details on the incident, the exact incident that took place, because it turns out that Pakistani soldiers have been targeted in Balochistan. Give us more details on it. Sure, you rightly pointed out that last 36 hours have been very heavy on Pakistan, and yesterday 14 soldiers were martyred in an ambush, and no party has taken responsibility of the attack. But we know that Balochistan Liberation Army, in connection with, in conjunction with the Tehreek-e-Taliban Pakistan, they have been attacking the installation across Pakistan, and their main target has been Pakistan's army and Pakistan's law enforcement agencies as well. So we can assume that this attack was also carried out by BLA and TTP as well. But none of these organizations has taken responsibility yet. But thing is, 14 Pakistani soldiers have been martyred, and it was happened yesterday. And according to my sources, these vehicles were actually patrolling out of Quetta and on the border of Quetta and Pasni as well, and where they was attacked by the terrorists. And according to one of my sources, a number of other soldiers have been injured, and they are rushed to a military hospital in Quetta as well. Let me tell you that so a couple of hours this incident had taken place, the terrorists struck once again, and 5 people were killed in Dera Ismail Khan, another big city that is actually situated in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province. And according to my sources, as many as 20 people were injured, and they are under surveillance in the Pakistani hospitals as well. Now, moving forward, after 6 to 7 hours, the terrorists had striken for the third time, and this time they attacked a very heavily guarded Pakistan's Air Force base that is iconic and strategically important base in Mianwali. And we are getting from his sources is 9 terrorists have been parried, 3 aircraft were damaged, and Pakistan Army claimed that they were already grounded, but yet they were attacked. Right. And so we can say that 3 attacks in last 26 to 36 hours, and it has sent shocking waves across Pakistan. Pakistan's military was the prime target, and definitely when Pakistan is heading towards the next general election, such type of incident, terrorist activity says a lot. So Pakistan is in a fix, Shamanji. Next breaking Dalo. Well, in fact, Kaswar, let me just, before we
play out more details of the attack that took place at Pakistan's airbase. Just a quick question with regards to the Balochistan story that we are getting in right now. Over the last several weeks, we have seen that Pakistani soldiers have been targeted. Remember, in Balochistan, there is an armed resistance towards the presence of a Pakistani army to begin with. Could you give us more details about the clashes that have also taken place with the presence of the Chinese too? Well, exactly, Shaman. We all know that Pakistan and China have actually signed a multi-billion-dollar contract of China-Pakistani corridor, and Gwadar is a city where this multi-billion-dollar project ends actually, and the Chinese and Pakistani authorities have established a big, huge deep sea water port as well, and there has been, I can tell you that there has been Balochistan Liberation Army has been resistant to the Pakistani side as well. But over the time, the resistance have been met by solid, response from the Pakistani side as well. But still, thing is, it still continues, and definitely the Chinese investment is at the scale in Gwadar and Balochistan as well. And let me tell you that in last 5 years, the Balochistan Liberation Army has attacked Pakistan army installation and the Chinese over there for countless time. And what is haunted Pakistani authorities is that Balochistan Liberation Army have actually joined hands with Tehreek-e-Taliban Pakistan and also ISIS as well. So these three terrorist organizations are actually giving very tough time to the Pakistani. Definitely, as you rightly pointed, that Chinese are over there, Chinese investment is over there, and to some extent that has been put at stake as well. But we have seen in the past years that Balochistan Liberation Army has attacked a number of installations, and all of the installations were either of Pakistan's armed forces or the Chinese and even the CPEX as well. Even a couple of years ago, you remember that the Balochistan Liberation Army had attacked a fully guarded, heavily guarded local hotel over there. And when the attack happened, the Chinese ambassador had just left a minute before at the same location as well. So it means that Balochistan Liberation Army have been attacking on one side the Pakistan installation, and on the other hand, the Chinese have been over their radar as well. This is really something that is haunting both Pakistani sides and the Chinese sides as well. But there is no let-up in such type of attacks. And as we have seen yesterday, that the organization, the terrorist organization... Kaswar, I'll just request you to stay on because let's just move on with some more breaking news now coming in. Kaswar, I'll just request you to stay on because we'll also move on with some more breaking news now coming in with regards to that attack that took place at the airbase where 9 heavily armed jihadis had attacked a Pakistan Air Force training base early this morning in Punjab province. This comes a day after 17 soldiers were also killed in 3 separate terror strikes in the country. Now, what's important to point out here is that the Air Force base which has been attacked in Mianwali is important, quite significant, given the fact that Pakistan Air Force houses most of its fighter jets at Mianwali Air Base. Let me just quickly go back to Kaswar. Kaswar, what's the latest that you're picking up in terms of the operation that has been carried out and the significance of Mianwali Air Force Base? First, bring us up to speed about the current situation. Has the operation been over? Who exactly has now claimed responsibility for this attack? Third attack in last 36 hours that the 9 terrorists have unleashed a well-coordinated attack on Pakistan's Air Force base in Mianwali, and that was responsible with the full force. And what I am getting from my official sources is that all the 9 terrorists have been killed, but unfortunately the terrorists managed to attack already grounded 3 aircraft and other installation as well. There was partially damage that had happened to 3 aircraft and other installations inside the airbase, but largely
the Pakistan security forces managed to foil this attempt as well. What is most important is that this airbase is heavily guarded, and Pakistan house one of it. Pakistan keeps its best fighter jets at the same airbase as well. In the past, same airbase was attacked as well. And 3 years ago, it was attacked. But unfortunately, in the early hours of Saturday, it was once again attacked. But this time, it appears that Pakistan security forces were very well informed, and they responded to the terrorist attack with full force. There was no casualty on the part of Pakistani army, but thing is, 9 terrorists have been sent to hell. And but Shamar, what is important is that it was third attack. So it appears that first the terrorists had attacked on Pakistan's security forces convoy. A few hours later, we'll just put this breaking news right now. Kaswar, could you just tell me, in terms of the damages, the losses that Pakistan Air Force had to sustain? 3 Pakistani fighter jets have been damaged in this attack. What more details can you put out? According to my sources, 3 aircraft, that was not actually fighter jets. They were surveillance aircraft which had been already grounded on the airbase. They were under repairing mode, and these 3 aircraft had to face damage in this terrorist attack. This is what I am getting from the sources. It was the only damage on the part of Pakistan's Air Force that was caused by these terrorists. But on the other hand, it was responded by full force by the Pakistani army, and all the 9 terrorists have been killed. They were actually sent to hell by the Pakistani army. But what is important is that this heavily guarded airbase, which is iconic and strategically important, only 220 miles away from Pakistan's Islamabad, Pakistan's capital Islamabad. But question have been arised that if such a heavily guarded airbase can come under attack, so what to talk about other things as well. But on the other hand, we must appreciate Pakistani army that they responded with full force. Only 3 aircraft that were already grounded on the airbase, they had to face the damage, and no casualty on the part of Pakistan Armed Forces as well. It was heinous attack, and it was third in last 36 hours. Kaswar, I'll just request you to stay on, as our defense experts also join us on this broadcast. I'm told Major Samar Paltur is joining us on this broadcast. Major Tur, help us understand the significance of this Pakistani